Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani. Let me play then, if you don't play cartels. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavati Vastatya Desatani.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Gaurani Dai, Gaurani Dai, Gaurani Dai, Jaya Gaurani Dai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Go Sitaram Pramanande. Please take this. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shiva Gopal Krishna Krishna Prabhupada Society Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvisesa Sunyabhani Paschatya Desatari Om Dhyana Timirandasya
Gyanangana Salakaya Chakshurunmilitam Yen Tasmai Shri Gurave Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Juta Palakamalam Shri Gurum Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sadvaitam Sagadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopes Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavadishwari Visabhanu Sate Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavane Vaishnaveyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashani Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. The discussion, what we're going to have for the next few days, is about Srila Prabhupada's Kirtan standard. I was inspired from the book that was written by His Holiness Jayadvaita Swami. So most of the readings that we're going to have is from this book, and I will make some elaboration as much as I can when we go along while we read. तो अगले कुछ दिन तक हम ये चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी का कीर्तन का क्या स्तर है, उन्होंने क्या मापदंड तय किया है। अधिकतर जो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे वह जयदेव स्वामी महाराज की पुस्तक से है, जो कि अभी महाराज ने आपको दिखाई। अधिकतर इधर से ही हम लेंगे और कुछ मेरा भी विस्तार रहेगा। Yes, this book was released, it was published last year, and His Holiness gave me, it says 2023, but I received the book in Mayapur. 2023 में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन मुझे पिछले ही वर्ष मायापुर में महाराज ने ये उपहार स्वरूप दिया। Yes, I will read something to you which inspired me to take up this seminar for the next few days. मैं इस ग्रंथ में से कुछ पढ़ूंगा जो कि मुझे प्रेरणा दिया इस सत्र को लेने में। His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj says in the preface of the book, I hope that readers of this book will give pleasure to Krishna and Krishna's devotees and find pleasure themselves and attract others through Anukirtanam. महाराज इसमें कुछ प्राप्त कथन में से पढ़ रहे हैं, तो उसमें जयदेव स्वामी लिखते हैं
कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस ग्रंथ के पाठकगण कृष्ण और कृष्ण भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवश्य कीर्तन करते हैं। Anukirtanam means the ways of great authorities, chanting the holy name of the Lord in the ways of great authorities, following them. अनुकीर्तन का अर्थ है अनुगत में कीर्तन करना, जैसे पहले के महाजनों ने कीर्तन किया है ठीक उसी प्रकार उनका अनुसरण करते हुए कीर्तन करना। Specifically, Srila Prabhupada, who brought the holy name to the West in 1966. विशेष रूप से प्रभुपाद जी का अनुसरण करना जो 1966 में भगवान नाम को पाश्चात्य देशों तक ले गए। So there are two kinds of chanting, actually three kinds of chanting the holy name. One is japa, like we have what we do in the morning with this rosary type or japa beads. तो भगवान नाम को उच्चारण करने के तीन प्रमुख तरीके हैं। एक तो नाम जप जो हम सुबह करते हैं जप माला के ऊपर। There is also the silent japa, which is like almost you're not able to hear, which is called manasa japa. This is within internal through the mind. एक दूसरा जप होता है जिसको मानसिक जप बोलते हैं। ये मन में ही होता है, बाहर इसकी आवाज नहीं आती। This is for the Paramahamsa, परमहंसों के लिए है। like Srila Haridas Thakur. जैसे हरिदास He would chant 192 rounds every day. प्रत्येक दिन 192 माला जप करते थे। That means 3 lakhs names of the Lord. लगभग 3 लाख नाम प्रतिदिन। And he will divide the chanting like 64 rounds in Japamala वो 64 माला अपने जप माला पे करते थे and 64 rounds in True Manasa. और 64 माला वो मानसिक रूप से करते थे। And the other 8 hours, because it takes about 64 rounds, it takes 8 hours to chant through Harinam Sankirtan. और बाकी के 8 घंटा, क्योंकि 64 माला जप करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, तो बाकी के 8 घंटा वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। Srila Prabhupada instructed us to chant japa because of our conditioning, especially in the West. He tried to instruct the first followers to chant 64 rounds in the beginning. तो जो नौसंख्या भक्त है उनके लिए यही उपदेश दिया जाता है कि वो जप माला के ऊपर बोल करके जप करें, क्योंकि शुरुआत में जो 64 माला अगर बोल दिया जाए तो कठिन होता है। But he was not able to do it because knowing the mentality of the first followers, the young people, first he instructed them 64 rounds, then they're not able to do it, then he says, okay, 32 rounds, and still they're not able to do it. Then he says, okay, minimum 16 rounds, no less. तो प्रभुपाद जी ने पहले तो 64 माला जप करने का उपदेश दिया अपने पाश्चात्य देश में, लेकिन जब उनको लगा कि 64 माला नहीं कर पाएंगे तो उसको कृपा करके कम करके उन्होंने 32 कर दिया। लेकिन फिर भी वो देख रहे थे कि इसमें भी वो असमर्थ होंगे, तो और कृपा करके उन्होंने उसको 16 माला कर दिया। कम से कम 16 माला तो जप करना ही है। And Srila Prabhupada has told us that the congregational chanting, the Sankirtan, is more powerful than the japa. Well, japa is powerful, but again, congregationally, when we chant all together, it makes it more powerful, the effect. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब सारे भक्त एक साथ आकर के मिलकर के हरिनाम जप करते हैं, विशेष रूप से वाद्य यंत्रों पे, तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। Which means that this is the Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. Harirnam, Harirnam, Harirnam Aivakevalam, Kalona Stevana Stevana Steva Gatir Anyata. यही जो हरिनाम है, यही धर्म है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। So it is imperative that the way we chant the Harinam Sankirtan, especially now, will be reflected in how we will go on the movement for the next 10,000 years. तो ये स्पष्ट बात है कि अभी हम जिस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसी ढर्रे में हम आगे 10,000 साल बिताएंगे।
Therefore, the effect of the chanting will be reflected by how we chant our japa. We still have to chant japa, even though Harinam Sankirtan is more powerful, the effect towards the chanters or the listeners. Individually, we still have to do our own japa. तो हरिनाम जब इस पे बहुत निर्भर करता है कि हम कीर्तन किस प्रकार से करते हैं। हरिनाम कीर्तन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने माला के ऊपर जप भी करना है। And whatever we do the whole day, how we chant our japa, our prescribed number of rounds, minimum 16 rounds, early in the morning, preferably, because this is the most conducive in chanting while it is still very, very peaceful. We call it Brahma Muhurta hour, an hour and a half before sunrise. And what we do during the whole day will be reflected in how effective our Sankirtan. तो हम जो कुछ भी दिन भर करते हैं वो सब हमारे जप को प्रभावित करता है। विशेष रूप से जैसे हम सुबह जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, वो सब हमारे संकीर्तन को प्रभावित करेगा। His Holiness continues. When we say His Holiness, it is Jayadvaita Swami. Okay? He says, we might also hope that the leaders of ISKCON temples and groups of all sorts will take care to teach Srila Prabhupada's standards for Kirtana to new devotees and devotees not so new. तो हमें पूरा विश्वास है, महाराज आगे बोल रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि ISKCON के नेता लोग नए भक्तों को पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि कीर्तन का क्या स्तर है उनको सिखाया जाए। Especially in flagship temples like those in Vrindavan and Mayapur. विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जैसे वृंदावन और मायापुर। And yet we don't want to smother Kirtan with rules. और फिर भी हम कीर्तन को नियमों में नहीं बांधना चाहते। The example of pure and enlivened Kirtan leaders who know Srila Prabhupada's standards and take pleasure in following them will help us most. तो हमको भरसक प्रयास करना है कि प्रभुपाद जी ने जो स्तर प्रस्तुत किया है नाम संकीर्तन के लिए उसको हम पालन करें। So Srila Prabhupada, as our founder Acharya, he set the best example in showing us how to chant the holy name of the Lord purely. प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि शुद्ध नाम जप किस प्रकार से किया जाए। So he would give instructions at different times, at different places, different devotees, but the standard is meant for everyone. तो प्रभुपाद जी ने अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग बातें कही, लेकिन वे सभी बातें कीर्तन की जो कही वो सभी के ऊपर लागू होती हैं। And he would say the same thing again and again wherever he goes. उसी चीज को बार-बार बोलते थे जहाँ कहीं भी वे जाते थे। Especially he trained many of our devotees. If you remember the 3 couples who went to London to establish Krishna consciousness in London, he trained them for so many ways how to do kirtan. प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से जो 3 गृहस्थ भक्त थे जो कि लंदन में गए प्रचार करने के लिए, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी कि किस प्रकार से कीर्तन किया जाए। And more often, Prabhupada is not so strict, especially when we chant in the public, but in the temple, or where there is a gathering of devotees, specifically like festivals, Guru Puja, Kirtan, morning program, he will be very, very strict that certain standard must be followed. प्रभुपाद जी जब कहीं बाहर में कीर्तन किया जाता था तो उस पे बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन विशेष रूप से जब मंदिर में जब गुरु पूजा है जहाँ पे भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं छुट्टी करने के लिए, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अधिक ध्यान देते थे। So this book was produced so that in the future, well, Maharaj was saying that
he's not really like pushing it in such a way, but he's just trying to give us more clarity of how Prabhupada would want us to do kirtan. तो महाराज जी का ऐसा वक्तव्य था कि इसमें बहुत तो दृढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी हमसे किस प्रकार के स्तर की अपेक्षा करते थे संकीर्तन के विषय में। He is not saying that this is like official for the ISKCON, but the way he presented it is like he collected so many letters, lectures, and statements from different disciples of Srila Prabhupada, main leaders, kirtan leaders of Srila Prabhupada, whom they were trained by Srila Prabhupada themselves how to do kirtan. महाराज ने कहना था कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसको जस्ट फॉलो किया जाए, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य और प्रभुपाद जी के अलग-अलग वक्तव्यों को उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया है। Because in the beginning of our movement, Srila Prabhupada started only with one tune. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की वजह एक साधारण से राग से की थी, जो महाराज ने अभी आपको सुनाया। And with this tune, the Hare Krishna became like a household word or name. Everyone, practically the whole world, and many devotees joined with this one simple melody or tune. इस केवल एक साधारण से राग से कई एक भक्त इस कौन आंदोलन में आकर जुड़ गए और ये घर घर में गाया जाने लगा। And in those days, Prabhupada, he first used a bongo. You know, a bongo? It's like one head, two heads. Also, but it's small, not really like a call or midanga. तो शुरुआत में प्रभुपाद जी बोंगो का प्रयोग करते थे, उसमें तो कोई रतन ठाणी के पास इसमें दो मुंह होते हैं। Or just kartals and what do you call this? Champa? Champa is small, or yeah, champa, a little bit bigger than this. Same shape, but a little bit bigger up to this. Yes. शुरुआत में साधारण से करताल थे और चंपा नामक कोई वाद्य यंत्र है। But then later on, the kirtan became quite different. So many instruments. Now they're using guitars, and this is in public anyway, or electric instruments. Mhm. तो लेकिन अभी का स्तर ऐसा है कि कीर्तन बहुत भिन्न हो गया है। कई बार हम लोग गिटार का प्रयोग करते हैं अथवा विद्युत चालित वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये सब पब्लिक के लिए है, भक्तों के लिए। Or organs and violins and so on. This is in public, but we don't use this inside the temple room, isn't it? No, we don't use it. ऑर्गन्स और वायलिन्स ये सब जो है हम लोग बाहर प्रयोग कर सकते हैं, जब बाहर जाते हैं रोड में कीर्तन करने के लिए, लेकिन मंदिर में साधारण जो मृदंग और करताल है। Because we want to attract the public, so that the public also will be attracted and join the chanting of the holy names of the Lord. क्योंकि हम जनमानस को भगवान नाम की कीर्तन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। So this is the process in Kali Yuga, the chanting of the holy name of the Lord. But as we're going along, the main focus of chanting is to please Krishna. तो ये कलयुग में यही एक पंथ है कि भगवान नाम का संकीर्तन, लेकिन जैसे जैसे हम संकीर्तन करते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता। Yeah, we chant for the pleasure of the Lord, not for our own pleasure. हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, ना कि अपने सुख के लिए। There was a kirtan which we're going to read also later on. It just finished, and one of the disciples of Srila Prabhupada says, but his name was Swamiji then at that time. That was in Montreal. He said, Swamiji, I enjoyed the kirtan so much.
तो एक बार की बात है कि कीर्तन हो रहा था और जैसे कीर्तन खत्म हुआ तो एक शिष्य प्रभुपाद जी के उठे और उस समय प्रभुपाद जी को लोग स्वामी जी बोलते थे, तो उन्होंने बोला, शिष्य ने बोला, स्वामी जी मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगा। Prabhupada says, no, Kirtan is for the Lord's enjoyment, not for our own enjoyment. प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला उस समय कि नहीं नहीं, ये जो कीर्तन है भगवान की प्रसन्नता के लिए है, हमारी सुखी में नहीं है। Of course, when the Lord is pleased and happy, we also become happy. यह बात नितांत सत्य है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। So that is our main goal. When we chant the Lord, one time also His Holiness Lokanath Swami was asked, what is the mood that one should have when we do chanting? The first quality, and every time that we should be having, or the quality that we need to first cultivate, is humility. तो एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से पूछा गया कि भगवान नाम जप करने का, कीर्तन करने का क्या तरीका है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहला जो चीज हमको ध्यान रखना है वह है विनम्रता। So yes, this, I'm not an authority. I still wanted to follow the way how Prabhupada would want to see us perform kirtan in a standard way, so that ultimately this movement will go on for the next 10,000 years. But because of Maharaj's statement here that the leaders should assimilate and teach this, specifically in our flagship temples like Vrindavan and Mayapur, that's why it come about. तो मैं इस विषय में कोई विशारद पंडित नहीं हूँ जो कीर्तन के मापदंड तैयार करूँ, लेकिन जैसे कि महाराज ने इस ग्रंथ में ही प्रस्तुत किया है कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को विशेष करके जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कीर्तन के क्या मापदंड तय किए हैं, क्योंकि अगले 10,000 साल यही कीर्तन आंदोलन चलेगा और यही मापदंड चलेगा। So from time to time, there will be some statements here in a negative way, because so many things going on at the moment that needs to be corrected, but it is not a criticism, but it is like something that we need to correct, to be corrected. It needs to be corrected. समय समय पर कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बोली जाएंगी जो ऐसा लग सकता है कि किसी की निंदा है, लेकिन वास्तविकता में ये निंदा नहीं है, ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए। Yes, the simpler it is, the better it is. The more elaborate it is, then the more it becomes difficult. Sometimes I've been to some Kirtan Mela also, and it's very difficult to follow the Kirtan leader because it's something new that I've heard. And the devotees were only able to be follow the Kirtan leader in the last 10 minutes of the Kirtan. कई बार जो है जितना आसान हो संकीर्तन उतना ही अच्छा है। कई बार मैं कई सारे कीर्तन मेला में गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जो गा रहे हैं उसको कोई पीछे से दोहरा ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना कठिन गाते हैं। केवल आखिरी के 10 मिनट जब थोड़ा तेज होता है तब लोग उनके पीछे पीछे गा सकते हैं, नहीं तो उनको पीछे पीछे उनके गाना बहुत कठिन हो जाता है। Maybe there's nothing wrong with that, but Kirtan means something that it is easily be able to follow. इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन कीर्तन का प्रयोजन यही है कि सब उसको गा सकें। And the most important ingredient here in the Kirtan is the purity of our consciousness. तो इस विषय में सबसे मुख्य चीज ये है कि हमारे हृदय की कितनी शुद्धता है। Again, many of us are still in the sadhaka platform, Vaidhi Bhakti. We're still wanting to follow, but we should follow those who are pure in their consciousness. तो अभी हम सभी जो है साधक हैं, वैदिक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, तो हमको प्रयास करके ऐसे भक्तों का अनुशीलन करना चाहिए जिनका चित्त शुद्ध है। It's like we had an example here in Vrindavan, which we've met and also did Kirtan, Ayendra Prabhu. जैसे हम वृंदावन में देखते हैं अयेंद्र प्रभु। He lived in a very simple way. During the daytime, whether you will only find him 3 places in Vrindavan temple. He doesn't go outside of the 4 walls of Vrindavan.
temple. तो बहुत साधारण तरीके से रहते थे। दिन में वे 3 ही जगह आपको मिलेंगे। ये आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि कृष्ण बलराम मंदिर की 4 दीवारी के बाहर वो कदम भी नहीं रखते थे। Either he is in his own room, in his ashram, own room, or the temple room, or in the bathroom. या तो वो अपने कक्ष में होंगे, आश्रम में, अथवा मंदिर प्रांगण में होंगे, अथवा वो बाथरूम में होंगे। ये 3 जगह में से किसी एक जगह। At his room, he will be doing his puja, his personal bhajan. And in the temple room, yes, he will be there doing kirtan. And sometimes he will give class. Yeah, few times he gave class. And in the bathroom, he will be cleaning the bathroom. तो जब वो अपने कक्ष में आश्रम में रहते थे तो अपना साधन भजन करते थे, अपने विग्रहों की पूजा करते थे। जब मंदिर प्रांगण में रहते थे वो कीर्तन करते थे, कभी कभी वे भागवतम क्लास भी देते थे, और जब भी वो बाथरूम में रहते थे तो बाथरूम की सफाई करते थे। So we can see that his lifestyle, the purity that he exemplified, reflects in how he chants during the kirtan. हम देख सकते हैं कि उनके हृदय की शुद्धता उनके संकीर्तन में झलकती थी, किस प्रकार वे भगवान नाम का जप करते थे। And he became a legend in ISKCON. और वो महान व्यक्ति हुए ISKCON में। Let's hear from the teachings of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada describes how a devotee in pure consciousness chant Lord Krishna's holy names. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में से ग्रंथ है, उससे उसमें से कुछ लाइन नोट किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसका चित्त शुद्ध है वो जप करता है, संकीर्तन करता है। It says, a bona fide spiritual master chants the holy names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and the transcendental sound vibration enters the ear of the disciple, and if the disciple follows in the footsteps of his spiritual master and chants the holy name with equal respect, this chanting constitutes worship of the transcendental name. तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु भगवान नाम का जप करता है, और जब यह दिव्य पवित्र नाम एक शिष्य के कर्णों में प्रवेश करता है, और यदि वो ठीक ठीक अपने गुरु का अनुशीलन कर रहा है, उनके पग चिन्हों पर चल रहा है, तो वो भगवान नाम की आराधना कर रहा है। So yes, when the chanting of the Lord's holy name has been heard from a pure devotee, then the effect, our heart becomes purified, and all of our misgivings and the sinful desires start to fly away, go away. तो जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान नाम का जप सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, और जो कुछ भी अनर्थ है, पापों की प्रवृत्ति है, वो सब जाने लगती है। So this is the effect of pure chanting. Prabhupada gave an example that chanting of the holy name of the Lord should not be heard. We should not hear from non-devotees, because the effect is that instead of us becoming purified, we become contaminated. And he gave that example of a glass of milk touched by the lips of the serpent. It looks like milk, but it becomes poisonous. It's deadly. प्रभुपाद जी बोलते थे कि किसी भी अभक्त के मुख से हमको भगवान नाम का जप नहीं सुनना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होने की बजाय और दूषित हो जाएगा। प्रभुपाद जी इस विषय में दूध का उदाहरण देते हैं कि यद्यपि दूध पौष्टिक होता है, लेकिन यदि कोई सांप उसको अपनी जीवा से स्पर्श करते हैं तो वो जहर हो जाता है। Says when the transcendental name is worshipped by the devotee, the name himself spreads his glories within the heart of a devotee. तो जब कोई भक्त इस प्रकार से भगवान नाम की पूजा करता है, आराधना करता है, तो भगवान नाम अपना प्रभाव उसके चित्त में छोड़ देता है। Yes, our heart is full of material desires. Prabhupada says it is as black as a coal.
So when we hear the sound vibration coming from pure devotee, then our heart becomes cleansed and Krishna will be invited to also reside within our heart. तो हमारा हृदय ये भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, कोयले की जैसे काला है, लेकिन जब हम भगवान नाम का जप करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान के आने के लिए उपयुक्त स्थान हो जाता है। And then finally Prabhupada says, when a devotee is perfectly qualified in chanting the transcendental vibration of the holy name, he is quite fit to become a spiritual master and to deliver all the people of the world. जब कोई भक्त ठीक से भगवान नाम का जप करता है और उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो वह स्वयं आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य हो जाता है और समस्त जगत का उद्धार करने के योग्य हो जाता है। So our process works due to its purity. तो हमारा जो मार्ग है इसमें शुद्धता की नितांत आवश्यकता है। By parampara. परंपरा के माध्यम से हम हरिनाम सुनते हैं। And our disciplic succession is more of a shiksha guru parampara. तो हमारी जो परंपरा है इसमें शिक्षा का अधिक महत्व है, शिक्षा गुरु। Yes, diksha is there, but more of shiksha. दीक्षा भी होती है लेकिन शिक्षा ज्यादा महत्व है। It's like for the next 10,000 years, Srila Prabhupada is our samstapaka acharya. He is our shiksha guru. अगले 10,000 सालों के लिए प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं वही हमारे शिक्षा गुरु हैं। And as Prabhupada says, or Bhaktivinoda Thakur says, that sometimes the shiksha guru becomes more prominent than the diksha guru. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कभी-कभी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। And the ultimate deliverer of all the devotees in ISKCON is none other than our Srila Prabhupada. और ISKCON में जितने भी भक्त हैं उनको पार लगाने वाले प्रभुपाद जी के अतिरिक्त और कोई नहीं। Prabhupada gave that example that the Diksha Guru is like a postman. प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो दीक्षा गुरु है वो पोस्टमैन की तरह है। Yeah, he delivers the mail or the package intact, not subtracting and not putting something inside. जैसे कोई पोस्टमैन ने डाकिया किसी भी पत्र को या पार्सल को उसमें पूरा छेड़खानी किए हुए व्यक्ति को प्रदान करता है। And in our sampradaya, in this ISKCON, Brahmamatva Gaudiya Sampradaya, Srila Prabhupada is our connection to Lord Krishna. So ultimately, Lord Krishna is the ultimate deliverer. तो ये जो हमारा ISKCON है ब्रह्ममंडल गौड़ीय संप्रदाय, इसमें प्रभुपाद जी हमारे और कृष्ण के बीच में कड़ी है, तो वास्तविकता में कृष्ण ही सबको पार लगाना है। And if we follow Srila Prabhupada, then he will deliver us to go back home, back to Godhead. तो यदि हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग का अनुशीलन करेंगे तो वो हमको भगवत धाम तक ले जाएंगे। Especially when we follow his standard of Kirtan. विशेष रूप से उन्होंने कीर्तन के लिए जो मापदंड तय किए हैं उनको यदि हम ठीक से अनुशीलन करते हैं। So now we will start. That is just the introduction. ये तो केवल शुरुआत की, अब हम चालू करेंगे। Kirtan Sadachar, or the etiquette of Kirtan. तो कीर्तन का क्या सदाचार होना चाहिए पहले इस विषय में। Especially His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, he wrote a book, Vaishnava Etiquette, and within that, one of the sections is about Kirtan etiquette. तो विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा था जो कि वैष्णव सदाचार नाम से प्रसिद्ध है। उसी में एक खंड था कीर्तन का क्या सदाचार होना चाहिए। So in the whole seminar that we will be discussing is about this Kirtan etiquette, or the etiquette of Kirtan. तो इस पूरे सत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कीर्तन का क्या मापदंड है। But specifically with a reference from Srila Prabhupada. विशेष रूप से प्रभुपाद जी जो बोले हैं उधर से हम चर्चा करेंगे। So I'm going to read now those different etiquettes of Kirtan, and then throughout our discussion, we will also mention them, but in different places from time to time.
अब हम कीर्तन के अलग अलग सदाचार जो है उन पर चर्चा करेंगे और समय समय पर मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। Kirtan means glorification of Sri Hari by means of singing. कीर्तन का अर्थ है गान के माध्यम से श्री हरि के गानों गुणों का गान करना। So in these discussions that are about to be followed, will follow in the next few days, because reciting Shrimad Bhagavatam is also Kirtan. तो भगवान जो श्रीमद् भागवत का पाठ है वो भी एक प्रकार का कीर्तन है। Yes, Sukadev Goswami was doing Kirtan along with Parikshit Maharaj for 7 days. तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं और वो परीक्षित महाराज के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। So there are two things here. When one devotee sings by himself, it is called bhajan. तो इसमें दो चीजें हैं, जब कोई भक्त स्वयं जो है नाम जप करता है तो उसको भजन कहते हैं। And Prabhupada says in the Bhagavad Gita, one of the purports, that bhajan is only meant for Lord Krishna, Lord Vishnu. तो एक जगह प्रभुपाद जी गीता में तात्पर्य में बोलते हैं कि भजन तो केवल भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के लिए है। There is no such thing as bhajan Ganesh or bhajan Shiva. It's always bhajan Govindam. तो ऐसा नहीं है कि हम शिव का भजन करें या तो गणेश का भजन करें, भजन तो केवल गोविंद का होता है। And we will learn also, we will hear later on, that in Kirtan, certain instruments should be used. तो आगे हम देखेंगे कि कीर्तन में कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। The use of harmonium is not meant to be used during Kirtan. तो हारमोनियम को कीर्तन के समय प्रयोग करने का विधान नहीं है। Just like when we sit down and then one devotee will sing a glorification of the Lord, then he can use harmonium. This is called bhajan, singing the songs of the Vaishnavas, Vaishnava Acharyas. जब हम कुछ भक्त साथ में बैठ करके वैष्णव आचार्यों के भजन गाते हैं तो उस समय हारमोनियम का प्रयोग किया जा सकता है। In temple room, we should not use also harmonium. लेकिन मंदिर प्रांगण में हारमोनियम को प्रयोग करने का प्रावधान नहीं है। Or what we call djembe, या तो You know, जैसे like- जाते हैं उसका भी प्रावधान है। like African drums, like that. It should not be used. उन जैम्बे अफ्रीका से बने हुए ड्रम का प्रयोग नहीं करना। We will discuss more later on about the instruments to be used. इसको हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। Number 2, glorify Sri Krishna, not yourself. दूसरा मुद्दा ये है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति गानी है, स्वयं की नहीं। Because there is a tendency that the Kirtan leader, he will show his musical ability, that again, he's very expert, but then he would like to show that he's being glorified more by the other who's in the Kirtan, more than the attention is unto him instead of Lord Krishna. कई बार ये साधारण प्रवृत्ति हो जाती है लोगों में कि भगवान की कीर्ति की जगह व्यक्ति अपनी कीर्ति का विस्तार करना चाहता है कि मैं कितना बड़ा गवैया हूँ, सभी लोग जान जाएं कि औरों की तुलना में मैं कितना अच्छा गाता हूँ। Have you noticed this क्या आप in इसका some कहते हैं? Kirtans? Yes or no? Good, you're a good observer. आप अच्छी प्रकार से Sing with sincere devotion for the pleasure of Sri Krishna and his devotees. तो हमको प्रयास करना चाहिए कि बहुत ही प्रामाणिक तरीके से भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम गाएं। So even in singing, this has to be executed, or this has to be seen. We can see, as Prabhupada says, you can tell a devotee's advancement by his service attitude. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी भक्त किस हद तक भक्ति में अग्रसर है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसकी सेवा भाव किस प्रकार से है। By one's sincerity, being focused. तो यदि कोई भक्त व्यवसायिकता बुद्धि वाला है, तब हम समझ सकते हैं कि भक्ति में बढ़ा हुआ है। Number 5, the instruments that Srila Prabhupada instructed for accompanying Kirtan were kartal, mridanga, and champa, wampers.
तो प्रभुपाद जी ने जिन वाद्य यंत्रों के विषय में बताया है कीर्तन करने के लिए, वो है करताल, मृदंग और चंपा। He didn't approve of harmonium for kirtan. प्रभुपाद जी ने कीर्तन के लिए हारमोनियम का प्रावधान नहीं किया था। For bhajan, it is all right. भजन के लिए एकदम ठीक है, वैष्णव भजन के लिए। The instruments, especially jampa, should not drown out the holy name or cause pain to the ears. चंपा इतनी जोर से नहीं बनाना चाहिए कि कानों में दर्द होने लगे अथवा भगवान नाम ही ना सुनाई दे लोगों को। See, a good kirtan leader should be able to control the musical instruments. If the Midanga is going faster than the kirtan leader, how he sings, he should be able to tell him, slow down. तो कीर्तन लीडर जो अच्छा कीर्तन लीडर है, वो वाद्य यंत्रों को अपने कीर्तन के अनुसार नियंत्रित करना उसको आना चाहिए। यदि मृदंग बहुत जोर से बज रहा है तो उसको धीरे करने की कला उसको आनी चाहिए। In India, there are only two speeds in kirtan. भारत में केवल दो ही गति है कीर्तन गाने। What are they? वो क्या है? Fast and faster. तेज और अधिक तेज। No, it should be melodious in the beginning, building up slowly, slowly, then it will rise up into ecstatic mood. Then I've heard in the early days the kirtan they will go really slow, then fast, then they will go down. It's not like that. तो वास्तविकता में जो कीर्तन करने की पद्धति ये है कि शुरुआत में मधुर गीत से चालू होना चाहिए, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि बढ़ती ही जाए, कुछ समय के बाद उसको घटाना भी चाहिए। Yeah, it says here, the instruments should follow the kirtan leader. जो भी वाद्य यंत्र हैं वो कीर्तन के अगुवा के अनुसार ही बजने चाहिए। And there is a tendency, especially those who are playing instruments like the midanga, they don't chant. They don't we say respond to the kirtan leader. They will just play midanga, but they will not do any kirtan, be part of the kirtan. That is not good. कई बार ऐसे देखा गया है कि जो मृदंग इत्यादि बजाने वाले भक्त हैं, वो स्वयं कीर्तन नहीं करते हैं। वो बजाने में इतना मस्त हो जाते हैं कि कीर्तन स्वयं मुख से बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। You observe this also? क्या आपने देखा? Then they should not play the midanga. When I lead the kirtan and I don't see that the midanga player is not chanting, I will say bolo. तो मेरी ऐसी प्रवृत्ति है कि जब भी मैं कीर्तन की अगुवाई करता हूँ, देखता हूँ कि मृदंग बजाने वाला स्वयं कीर्तन नहीं कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ बोलो। Because you know why? They are more absorbed of their midanga playing than the holy name of the Lord. ऐसा इसलिए होता है कि मृदंग बजाने में इतना रचे हुए हैं कि भगवान नाम को भूल ही जाते हैं। They're thinking of how I can make it so intricate that I will be glorified that I am a good midanga player. वो यही सोचते हैं कि मैं इसको ऐसे और कितना पेचीदा बना दूं कि सभी लोग मेरे वाहवाही करें कि कितना अच्छा मृदंग बजाता है। No, His Holiness Gunagrahi Maharaj, Swami Maharaj, whose samadhi is here in our samadhi area, Vaishnava samadhi area. He will stop the kirtan if the midanga player who is accompanying him will not chant. ऐसा नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुणग्राही स्वामी महाराज जिनकी समाधि हरि वैष्णव समाधि में है, उनका ऐसे आदत थी कि यदि वो देखते थे कि मृदंग बजाने वाले स्वयं कीर्तन नहीं करते थे तो उसी समय कीर्तन को रोक देते थे। So try to observe also, okay? The next kirtan, see if the midanga player is chanting also. ये आप लोग अगले कीर्तन देखिएगा कि मृदंग बजाने वाले स्वयं जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 90%, I would say 99%, they will not chant. 99% लोग जो है स्वयं कीर्तन करते नहीं हैं। I'm not going to mention any name, but he will always want to play midanga, but he will not chant while doing in the kirtan. नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्वयं समझ जाए। Use simple melody and preferably the appropriate melody raga for the time of day. तो दिन में अलग-अलग समय के अनुसार अलग-अलग राग होते हैं, तो समय के अनुसार दिन के समय के अनुसार राग गाने चाहिए। Well, this is very interesting because raga means
they're also actually servants of Lord Krishna. ये बहुत दिलचस्प वाली बात है क्योंकि जो राग हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण के नौकर They're हैं। also personalities ये लोग भी व्यक्ति हैं where at a certain day or time of the day, there's a certain mood that is being created. If it is the right tune or melody at that right time, then it enhances the mood more. तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग बताए गए हैं। यदि उस समय दिन के उस समय में वो पर्टिकुलर राग गाया जाता है तो एक विशेष भाव का उदय होता है। It's like we have morning tune, yes, Mangalartik tune. जैसे सुबह सुबह मंगल आरती का एक विशेष राग होता है। All the Gaudiya Vaishnavas know this melody. सभी गौड़िया वैष्णवों को यह राग पता है। During the Brahma Muhurta hour, that Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so this is the melody. Okay, in the morning. Now, if you chant this melody now, it will not fit because it's the wrong time. It's evening time. तो ये जो है अलग अलग समय के लिए अलग अलग धुन होता है। अभी जो महाराज ने गा के बताया ब्रह्म मुहूर्त की ध्वनि है जो कि सभी गौड़िया वैष्णव को पता है। अगर इस धुन को इस समय गाया जाए तो इस समय इसका सामंजस्य ठीक से बैठेगा नहीं, भाव नहीं उत्पन्न होगा। One time I was chanting Gora Artik, and Ayendra Prabhu heard my chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. He says, I was brahmachari then. He says, Prabhu, stop. This is not the melody. This is not the tune that in this time, because what's that tune? Kiba Jaya Jaya Gora. No. Like in the Radha Krishna temple. Kiba Jaya Jaya Gora Chande Aroti Ke Sobha Jana Vitata Vani Jagamana Lobha. No, that's not the one. तो एक बार की बात है Don't कि chant मैं that. गौरा आरती गा रहा था। उस समय अयेंद्र प्रभु ने मुझे टोका कि मैं जो धुन गा रहा हूँ वो इस समय के लिए ठीक नहीं। So I changed like Kiba Jaya Jaya Gora Chande. No. What's the now I'm Kiba Jaya Jaya Gora Chande Aroti Ke Sobha. That's the right melody at this time in the evening. अभी जो महाराज ने गा के बताया वही ये शाम के समय गाने वाली धुन है, सुबह समय गाने। So if you chant a melody which is not meant for that specific time, then the mood of the kirtan changes. यदि हम कोई ऐसा राग गाते हैं जो समय के उपयुक्त नहीं है तो पूरे कीर्तन का भाव ही बदल जाएगा। And we'll not be able to please Lord Krishna. और तब हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। Because there's a certain melody where if you chant proper time, it will please Krishna the most. तो समय के अनुसार राग होते हैं। यदि उस समय के अनुसार हम राग गाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। Yes, that is very, very important to understand and to remember. समझना और याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Number 7, don't think that you are the best singer, therefore you should lead. जो है ऐसे कभी मत समझो कि जो है आप सबसे बढ़िया गवैया हैं तो आप ही आगे गाएंगे। See, in ISKCON, in our movement, if you're not asked to lead, you should not lead. इस कॉल में यदि आपसे कोई बोले नहीं कि आप आगे से गाइए तो आपको इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। It is not because you think that you are the best kirtaniya, then you should be leading all the time.
ऐसा नहीं कि आप हमेशा सोचें कि मैं सबसे बढ़िया कीर्तनिया हूँ तो सबसे आगे मैं ही गाऊंगा। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would ask one of his disciples to lead Kirtan. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद वो एक अपने विशेष शिष्य को कीर्तन करने के लिए बोलते थे। But his Kirtan, when he leads the Kirtan, is out of tune. It's not the right timing. It's like it's off. लेकिन उनके कीर्तन में कोई लय ताल नहीं रहती, कई बार जो है वो उसके लय के अनुसार नहीं गा पाते। And so the disciples, other sannyasis, will ask Guru Maharaj, why are you asking him to lead the Kirtan? कई जो सन्यासी शिष्य थे पूछते थे उनसे, कह रहे गुरु महाराज आप इनसे क्यों गवा रहे हैं? Because he is very sincere. वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बात बोलते थे क्योंकि ये अत्यंत प्रामाणिक भक्त हैं, He is very simple, अत्यंत साधारण भक्त हैं and his singing is pure. और इनका जो गान है वो शुद्ध है। So it's not necessarily that the one who sings the best, seemingly, we don't know what is his intention. तो कई बार जो है हो सकता है कि गाता तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसकी चेतना क्या है हमको पता नहीं, Or what is his lifestyle, how he spends the whole day, what does he do? तो उसकी दिनचर्या क्या है उसके विषय में कुछ पता नहीं कि दिन भर वो क्या करता है। But if you see a simple brahmachari who's engaged in some menial service, he could be a better kirtan leader than the person whom we don't know what is he doing. I'm sorry, it's not criticism, but it's better that that simple brahmachari will lead the kirtan. तो ये इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई साधारण सा ब्रह्मचारी है जो दिन भर सेवा में लगा हुआ है, उनको पता है कि दिन भर भक्ति में लगा हुआ है, यदि वो कीर्तन की अगुवाई करता है तो कहीं अधिक अच्छा है। It continues here. Vaishnavas are by nature humble. आगे कह रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं स्वभाव से ही सरल होते हैं, विनम्र होते हैं। They naturally want to follow, not lead. वो साधारणता वो पीछे से गाना चाहते हैं, आगे से नहीं। The best leader is the best follower. तो जो सबसे अच्छा अगुवा वही है जो पीछे से बोलना चाहता है, गाना चाहता है। Remember this. It's like if you want to be grihastha, you should be a very good brahmachari. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यदि आप अच्छे गृहस्थ होना चाहते हैं तो आपको अच्छा ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। You cannot be a good grihastha if your brahmachari life is not so good. आप अच्छे गृहस्थ नहीं हो सकते यदि आपका ब्रह्मचारी जीवन अच्छा नहीं है। So if you want to be a good kirtan leader, then you should be able to be a good follower in kirtan also. तो यदि आप अच्छे कीर्तन के अगुवा होना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अच्छे से पीछे से बोलना भी जानते हैं। However, if they are requested to lead by the Vaishnavas, then they are happy to serve. हालांकि यदि कोई वैष्णव उनसे निवेदन करता है कि आप अगुवाई करिए तो इसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। You don't have to ask, they will ask you. आपको स्वयं नहीं पूछना चाहिए, वैष्णव स्वयं आपसे पूछेंगे। The devotee is naturally very famous because of his service. He doesn't have to advertise himself. Everyone will know that he is very advanced. कोई भी भक्त अपने सेवा भाव से ही भक्ति में अग्रसर होता है, सभी उसके सेवा भाव से ही जान जाएंगे, उसको अपना विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं। So purity of consciousness is the most important. चित्त की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। Because a devotee he just wants to glorify Krishna, क्योंकि भक्त जो है वो केवल और केवल कृष्ण का ही गुणगान करना है, not himself. स्वयं का नहीं। A person who wants to glorify himself cannot be called a devotee. जो स्वयं का गुणगान करना चाहता है उसको भक्त कहा ही नहीं जा सकता। Was that one who says is my devotee is not my devotee, but one who says is a devotee of my devotee, he is my devotee. भगवान के स्वयं के वचन है, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो बोलता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है वास्तविकता में वही मेरा भक्त है। Says here that a devotee sincerely seeks to please Krishna and the Vaishnavas. कोई भी
भक्त है वो प्रामाणिक रूप से भगवान और वैष्णव को प्रसन्न करना चाहता है। And again, we have to always remember Trinadapi Sunichena Taroriba Saistuna Amanena Manadena Kirtaniya Sadahari. हमको ये शास्त्रों ज्ञान रखना चाहिए। Sometimes devotees who just want to do kirtan, you ask them to do other service, they'll say, no, 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 Prabhu, I only do kirtan. कई बार जो है कीर्तनिया लोग से बोला जाए कि आप थोड़ा कोई दूसरा सेवा कर दीजिए तो बोलते हैं नहीं 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 प्रभु हम तो केवल कीर्तन करते हैं। It's like, Prabhuji, we need something to be done in the kitchen. Can you please help? No, 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 no. I just do kirtan. I'm sorry. अगर कोई बोले कि किचन में कुछ सेवा है रसोई में उसको थोड़ा कर दीजिए तो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो खाली कीर्तन करते हैं। So is he an ideal kirtan leader or a kirtaniya? तो क्या वो प्रामाणिक कीर्तनिया है? Yes or no? No. Of course not. नहीं। In this verse, we should, as Krishnadas Kaviraj Goswami says, we should tie them around our neck. तो इस श्लोक के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि इसको अपने गले के चारों ओर बांध देना चाहिए। Symbolic in such a way that we should always remember it. इसका मतलब है कि इसको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, be ready to offer respect to others, but not expecting any respect for oneself. Then, in such a state of mind, he can constantly chant the holy name of the Lord. Kirtaniya Sadahari. तो इस श्लोक में यही बतलाया गया है कि जब कोई भक्त विनम्र रहता है, अपने आप को घास से भी नीचा समझता है और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होता है, कभी भी स्वयं सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, दूसरों को हमेशा सम्मान देता है, ऐसा ही भक्त अच्छी प्रकार से हमेशा भगवान श्री हरि का कीर्तन करने के योग्य है। Says here, Kirtan is not meant for business. ये कीर्तन कोई व्यापार नहीं है। This is very important. Srila Prabhupada instructed, we should not try to make a profit out of the Hare Krishna mantra. Then our spiritual enlightenment will be hampered. प्रभुपाद जी बोलते थे कि कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र को बेचना नहीं चाहिए, उसका व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार से करता है तो उसकी आध्यात्मिक जीवन ठप हो जाएगा। This is a letter from His Divine Grace to Mukunda Das. Now is Mukunda Das Goswami Maharaj, 2nd of July 1969. And so one should not make a livelihood by forming a professional band to carry out congregational chanting. प्रभुपाद जी पत्र लिखे हैं मुकुंद दास गोस्वामी जी को 2 जुलाई 1969 को, तो उसमें बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को ये भगवान नाम के जप संकीर्तन को अपने जीवन को जीने का जरिया नहीं बना लेना चाहिए, अपनी वृत्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। How can we balance this? It's very difficult, isn't it? Because we've heard some devotees, they also have some kind of ways to, let's say, preach, but then they ask for a certain amount of money in exchange for their performance. Because Kirtan is not a performance. Is an act of how we want to glorify Lord Krishna and to spread the holy name. तो इसको किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि तो देखा जाता है कि कई एक भक्त हैं वे अपना एक बैंड बना लेते हैं और कहीं जाकर परफॉर्मेंस देते हैं, उसके लिए कुछ धन की भी आकांक्षा रखते हैं। तो इसको किस प्रकार से समझा जाए, लेकिन प्रभुपाद जी के अनुसार ये ठीक नहीं है। In the beginning of our movement, this was done by Srila Prabhupada also. Remember that in San Francisco, they charge ticket that to have Prabhupada was one of the performers. You may say performers. He was there. He's the main attraction.
What's that name of that Kirtan in San Francisco? Anyone can remember? Where different bands also, like rock bands, were invited to perform, but the proceeds was to fund for the temple in San Francisco, the first temple in San Francisco. तो कोई बोल सकता है कि प्रभुपाद जी ने भी तो एक बार ऐसे किया था सैन फ्रांसिस्को में, जब एक परफॉर्मेंस पे गए और वहाँ पर अलग अलग बैंड आए थे, तो वहाँ पर टिकट दिया जा रहा था, लेकिन वो जो कार्य था वो मंदिर के लिए था। Mantra Rock, remember that? Mantra Rock concert? Huh? But see the proceeds, it says here, even in 26 Second Avenue, in the earliest days of our movement. In both cases, the income was always meant for preaching, not for profit or family maintenance. This is very important. There's a big difference here now. तो प्रभुपाद जी ने ये सब किया, ये तो मंदिर की व्यवस्था के लिए था कि संकीर्तन आंदोलन ठीक से आगे से बढ़े, ये कोई वृत्ति चलाने के लिए या अपने परिवार की व्यवस्था करने के लिए नहीं था। Because one may say as an excuse that, oh, we're doing kirtan, but the proceeds will go into their own pockets. कोई बहाना मान सकता है कि हाँ हम कीर्तन करेंगे जाके, लेकिन इससे जो कुछ भी धन इकट्ठा होगा वो मेरी जेब में जाएगा। And if they will give to Krishna, it's only a farthing. It's not even 1% of the income, and they will use for their griha. तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर में बहुत थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, जो 1% भी नहीं होता है, बाकी सारा पैसा वो अपने गृहस्थी में लगाते हैं। So we have to be very careful how to draw the line whereby I am preaching, at the same time I have to maintain my family, but if more of the percentage goes to the family than for the preaching, spreading Krishna consciousness, then this is a no. तो इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, व्यक्तियों को, भक्तों को इस विषय में विवेक होना चाहिए कि कहाँ पर रेखा खींची जाए, कि भाई जो धन आ रहा है उसका कितना प्रतिशत हम भगवान को दे रहे हैं, कितना अपनी गृहस्थी में लगा रहे हैं। यदि भगवान को बहुत कम दे रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। There's a letter from Srila Prabhupada in 1967 to Jadurani Dasi. I understand also there was a kirtan performance given by Sri Purnadas. You have rightly remarked whether they are devotees. You are right. These people are professional singers. प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं जदुरानी दासी को 1967 में, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि आपने पूछा था कि श्री पूर्णदास ये भक्त है क्या, तो हाँ ये लोग भक्त हैं, ये लोग विशेष रूप से कीर्तन करते हैं। Krishna Kirtan is not for earning livelihood. Krishna Kirtan is not meant for entertaining the public for demonstration of arts. It is dynamic service to the Lord. तो ये जो भगवान का संकीर्तन है, ये कोई वृत्ति के लिए नहीं है, ये लोग खुश करने के लिए नहीं है, अथवा अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये तो भगवान की एक रुचि सेवा है। And Srila Prabhupada continues, we do not therefore mind so much about the artistic presentation of Krishna Kirtan, but we want to see how much a devotee is satisfying the supreme will. हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि यदि कोई बहुत कलात्मक पूर्ण तरीके से संकीर्तन करता है, हमको तो इसी से मतलब है कि वो भक्त भगवान को प्रसन्न कर पा रहा है कि नहीं। So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that these professional kirtaniya singers, when they sing Hare Krishna Maha Mantra or any mantras, they're actually singing mani mani. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जो पेशेवर कीर्तनिया रहते हैं, जो धन के लिए कीर्तन करते हैं, वो जब कीर्तन कर रहे हैं तो यही गा रहे हैं पैसा पैसा। Because they're calculating how much money I will get after this performance.
क्योंकि वो इसी गणित में है कि भाई जब खत्म होगा तब कितना पैसा मेरी जेब में गिरेगा। So the effect is that not pure. It's उसका not pure bhakti. उसका प्रभाव शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता है। It's like here also in Vrindavan, there's so many professional kathakars. Are you only enjoying when you're hearing, but then it doesn't have any change of heart for the listeners. देखते हैं वृंदावन में भी कई पेशेवर कथाकार हैं जो कि धन के लिए कथा करते हैं, तो सुनने में तो हो सकता है अच्छा लगे लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होगा। Kirtan is not for fame. कीर्तन जो है वो प्रसिद्धि के लिए नहीं है। Kirtan is meant for glorifying Krishna, not for gaining profit or fame. तो कीर्तन का प्रयोजन, एकमात्र प्रयोजन है श्री हरि की कीर्ति का विस्तार, उसका प्रयोजन धन कमाना या अपनी कीर्ति नहीं है। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote, Kirtane jahar pratishta sambhar, tahar sampati kevala kaitava. One who engages in chanting the Lord's name with hopes of enhancing his own material reputation finds that all his activities and paraphernalia represent only the riches of hypocrisy. यदि कोई भगवान का कीर्तन करता है धन कमाने के लिए अथवा अपने नाम को अपने नाम का नाम हो इसलिए, तो वो समझ पाएगा कि उसके पास कपटता का धन इकट्ठा हो रहा है। So Srila Prabhupada has warned us to escape, not to fall into this trap. प्रभुपाद जी ने हमको इससे बचने के उपदेश दिया है, इसमें गिरने का नहीं। Yes. Kirtan is for Krishna's enjoyment, not our own. कीर्तन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारे प्रसन्नता के लिए। So here, again, I told this story already, but we will tell it again. This happened in Montreal. Pradyumna was the secretary of Srila Prabhupada. He's actually the Sanskrit scholar who helped assist Srila Prabhupada in the translation of the Srimad Bhagavatam. ये मॉन्ट्रियल की बात है, प्रद्युम्न दास जी जिन्होंने प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में मदद किया। And at that time, Srila Prabhupada still called Swamiji. प्रभुपाद जी को भक्त स्वामी जी कहते हैं। So this happened in Montreal, circa 1968. मॉन्ट्रियल में 1968 में होता है। This is when our Guru Maharaj met Srila Prabhupada in Montreal. इसी समय जो है परम गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी से मिले। Because Prabhupada had to go out of US to get his permanent residency for US. प्रभुपाद जी को उस समय अमेरिका से बाहर जाना पड़ा जिससे कि उनको अमेरिका की नागरिकता था। So Pradyumna wrote, we had a glorious and very ecstatic kirtan, and as we were exiting and going down the stairs, and Prabhupada was going back to his apartment, Bamanadev turned to Prabhupada and said, तो प्रद्युम्न दास जी बोल रहे हैं कि हमारा जो कीर्तन था बहुत ही अच्छा और उत्तम कीर्तन हुआ, लेकिन फिर जब प्रभुपाद जी वापस अपने कमरे की ओर जाने लगे उस समय वामन देव जी उनसे बोले। how is this translation? Perfect, isn't it? You can remember many things. Thank you. Swamiji, Vamanadev told to Prabhupada, Swamiji, that kirtan was so enjoyable. Prabhupada immediately turned to him and said, तो वामन देव जी ने प्रभुपाद जी से बोला कि कीर्तन में बहुत मजा आया स्वामी जी। उसी समय प्रभुपाद जी उनकी तरफ मुड़े और बोले, Prabhupada said, Kirtan is not for your enjoyment. प्रभुपाद जी बोले कीर्तन आपके सुख के लिए नहीं है, Kirtan is for Krishna's enjoyment. कीर्तन तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। So we should always keep this in mind, huh? When we do kirtan, we are there to please Krishna for his own pleasure. तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। So this is an example of how the anga, the particular practice of bhakti, we call bhakti anga, must be grounded in a greater inclusive basis.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भक्ति का अंग जो कीर्तन है, इसका जो धरातल है वो सही होना चाहिए। And then we'll know that each one is rooted in, aspiring from, a desire to please and serve the Supreme Lord. इसका धरातल ये है कि भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो। We should know that we are eternal servants of Krishna and we should perform kirtan just to please Him. हमको याद रखना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमको जब कीर्तन करना है तो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। So if this is our way how we do kirtan, this will lead us to our goal, which is the attainment of love of God. यदि हम इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करते हैं इस भाव से तो बहुत शीघ्र ही हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। Kirtan is for pleasing Krishna, not the crowds. तो कीर्तन का प्रयोजन है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि जनता की प्रसन्नता के लिए। Srila Prabhupada wrote in a letter to Subal, the principle of chanting is to glorify the Lord and not to attract a crowd. तो प्रभुपाद जी सुबल को लिख रहे हैं कि जो कीर्तन का सिद्धांत है वो भगवान की कीर्ति के लिए है, जनरंजन के लिए नहीं। If Krishna hears nicely, then he will ask some sincere devotees to gather in such a place. यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं कीर्तन से तो प्रामाणिक भक्तों को भीतर से प्रेरणा देते हैं कि जाकर उसके कीर्तन में भाग लें। It's like in the first chanting of the holy name of the Lord, the Kirtan in Tompkins Square Park, many devotees joined at that time. They have never seen the Kirtan, how a pure devotee chanted in the very first time. That was the first time that they've heard the holy name of the Lord in pure form. जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब पहली बार टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन कर रहे थे उस समय कितने प्रामाणिक भक्त वहां पर आकर जुटे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार से शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं सुना था। A devotee once asked Prabhupada, when we're out on Sankirtan chanting, what would be the best way for us to engage the crowd to become participants in the chant with us? तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि जब हम कहीं बाहर में नगर संकीर्तन करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि हम भीड़ को जुटा लें और लोगों से कीर्तन करवाएं। Prabhupada replied, best way, you go on chanting. Your business is not to satisfy the crowd. प्रभुपाद जी ने बोला कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब करते रहिए कीर्तन करते रहिए, आपको लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। Your best business, your main business is to satisfy Krishna, and then crowd will be automatically satisfied. आपका मुख्य व्यवसाय होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो जनरंजन अपने आप हो जाएगा। Have you seen that video? There's a group of devotees from, I believe they're from Denver, Colorado. They were chanting in the streets, and then the Mridanga player says, can you say Gauranga? You've heard that? You've seen that video? And then the person who says, Gauranga? Then they keep chanting, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, something like that. So, and the devotees, when they chant ecstatically, when they chant really in a very good mood, pleasing Lord Krishna, those who are listening to the kirtan and those who are watching them, it's very infective. In fact, they become infected by the happiness of the devotees, and they also become happy. जब भक्त लोग उद्दंड प्रकार से कीर्तन करते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं कीर्तन करने में, तो ये एक रोग की तरह है जो दूसरों को भी लग जाता है, दूसरे लोग भी उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। We are going to give them something, Krishna. So you should be very much careful whether you are delivering Krishna in the right way. हम कीर्तन के माध्यम से उनको स्वयं कृष्ण ही दे रहे हैं, तो इस विषय में हमको नितांत सावधान रहना चाहिए कि हम उनको श्री कृष्ण को अच्छी तरीके से ठीक तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। It's like Prabhupada gave an example. If you water the root of the tree, then all the leaves, the branches, the twigs, they also get nourished.
जैसे प्रभुपाद जी भागवत सूत्रित करते हैं कि यदि हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो स्वतः ही जितने भी उसके पत्ते हैं, फल हैं, वो अपने आप ही फल हो जाते हैं। So if we please Krishna, then everyone becomes happy as well, तो यदि हम automatically. भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सब अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। By your chanting, some public is satisfied? No, we are not concerned with that. He may be satisfied or not satisfied. हमको इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि अगल बगल जो गिरे हुए लोग हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं इस पे ध्यान देना। But if I chant in the proper way, then my predecessors, the acharyas, will be satisfied. That is my business. Finished. हमको तो बस इसी चीज पे ध्यान देना है कि हम ऐसे कीर्तन करें कि आचार्य गुरु परंपरा ये सब प्रसन्न हो हमारे। The importance of following. Oh, here. We should hear from pure devotees. हमको शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। Srila Prabhupada says in his original purport from the Hare Krishna album, this chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effects can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotees should be avoided. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. प्रभुपाद जी हरे कृष्ण एल्बम में लिखते हैं कि जहाँ तक संभव हो हमको शुद्ध भक्त के मुख से ही हरिनाम का श्रवण करना चाहिए। यदि इस प्रकार से करते हैं तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव होता है और प्रयास करना चाहिए कि अभक्त के मुख से हमको श्रवण नहीं करना चाहिए। वो ऐसा ही है जैसे कोई सांप दूध को चाटते। Again, we have to be very, very careful to not to hear from non-devotees, because it will affect our consciousness. बहुत सावधान रहना चाहिए कि भक्तों के मुख से हम श्रवण ना करें क्योंकि हमारी चेतना को प्रभावित करेगा। I know there is one devotee, well, now he's criticizing ISKCON, but he grew up in ISKCON. I know him. He was a young boy in the Gurukul, and he became a very good singer, professional singer. But then now he despised ISKCON, criticized ISKCON, but still he is chanting and professionally. So, due to his bad experience, he came to that point where he really criticized the devotees in ISKCON, but still continues to be professional singer, and therefore this is the example that I can connect to this, that if one hears his chanting, it will not have any effect. On the other hand, it could be very dangerous. मुझे स्मरण आ रहा है कि एक भक्त थे, गुरुकुल में पढ़े थे, बाद में पेशेवर कीर्तनिया भी हो गए, लेकिन किसी कारण से ISKCON का निंदा करना चालू किए हैं। तो फिर ऐसे लोगों से हमको सुनने से बचना चाहिए, नहीं तो हमारी चेतना प्रभावित होगी। Prabhupada, just listen to this very important message. It's a letter to Murari. Our movement is being carried by spiritual strength from chanting of the Hare Krishna Maha Mantra from the lips of pure devotees. तो प्रभुपाद जी मुरारी जी को एक पत्र लिख रहे हैं कि हमारा जो ISKCON आंदोलन है ये हरे कृष्ण महामंत्र से जो प्राप्त शुद्धता है उससे आगे बढ़ रहा है और ये महामंत्र शुद्ध भक्तों के मुख से जपा जा रहा है। Our disciples are pure, and therefore the effect is that this movement is gaining in scope all over the world. हमारे शिष्य शुद्ध हैं और इसी यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में इतनी तेजी से ISKCON का प्रचार हो रहा है। So yes, in a sense, all of the followers of ISKCON are pure devotees. तो एक प्रकार से बोला जाए तो जितने भी ISKCON के फॉलोअर हैं वो सब शुद्ध भक्त हैं। So one may say, Maharaj, how is that? I still have so many material desires. हो सकता है ये कैसे संभव है, अभी भी मेरे पास इतनी सारी भौतिक I इच्छाएं don't हैं। consider myself as a pure devotee. मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे शुद्ध भक्त हूँ। But because we are on this path and our endeavors, our efforts ultimately will culminate to be a pure devotee.
क्योंकि हम एकदम प्रामाणिक मार्ग पर हैं और जो हमारे प्रयास हैं वे हमें शुद्ध भक्ति शुद्ध मार्ग के ऊपर ले जाएं। We just have to follow as much as possible to the best of our ability the process that's been given by Srila Prabhupada to us. तो जितना हमारे पास सामर्थ्य है हमको प्रयास करना चाहिए कि इसी मार्ग पर हम चलते रहें। But don't be duplicitous. लेकिन कभी भी कपट मत करिए, Don't be a hypocrite. कभी भी कपट मत कीजिए अपने। Don't be a double face. ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। Then we will become one day a pure devotee. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन अवश्य शुद्ध भक्त होंगे। Prabhupada gave an example. It's like a person who is about to go to America, he will buy a ticket. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे किसी को अमेरिका जाना है तो वहाँ के लिए टिकट खरीदेगा। He will go to the internet and find the cheapest ticket. वो इंटरनेट पे जाएगा और सबसे सस्ता टिकट देखेगा। And then once you receive the ticket, Prabhupada says you still have to go to the airport तो एक बार आपको टिकट मिला फिर भी आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। and be sure you're healthy because when you fly you need extra energy. और ये ध्यान रखना होगा कि आप स्वस्थ हैं क्योंकि जब आप उड़ते हैं तब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहनी चाहिए। And something might happen along the way to the airport. You may get a flat tire, then you will miss the plane. तो और रास्ते में भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। यदि रास्ते में टायर पंचर हो गया तो हो सकता है कि आपका एरोप्लेन छूट जाए। But having a plane ticket is almost saying that I'm already in America. आपके पास टिकट है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अमेरिका पहुंच गया। But no, you still have to go to the plane and hopefully the plane will land safely to New York or Atlanta or somewhere. लेकिन इसमें बीच में बहुत सारी चीजें हैं, आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा और आशा करते हैं कि ठीक एयरप्लेन अमेरिका में लैंड हो जाए। So as long as we are following the pure process that Srila Prabhupada has chalked out and also the predecessor acharyas for us to follow, then hope against hope, one day we also will become pure devotees of the Supreme Lord. तो फिर यदि प्रभुपाद जी और पूर्व के आचार्य ने जो हमको मार्ग दिया है उस पे हम सावधानी पूर्वक चलते रहेंगे तो अवश्य ही हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। Is there any question or comment so far? यदि किसी को कोई प्रश्न है, We have like almost a few more minutes. Okay. I think it'll take a long time to read this, but it's very interesting. Yes. Is there any mic? Oh, wait. Haribol, Sachinan. We need Bhakta mic here. You have an extra mic? Haribol. Give it to the Mataji first. Mataji first, then Brahmacharis after. Right there. Yes. हरे कृष्णा महाराज, Hare Krishna. आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हिंदी में मैं पूछ सकती हूँ? Yeah. Say महाराज, it. मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि अभी हमने हमें बताया कि कीर्तन जो होता है वो हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। पर जब हम कीर्तन करते हैं तो एक तरह का सुखद अनुभव हमें होने लगता है और वो एक तरह का रस है, जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि हर कोई एक रस को पाना चाहता है, वैसे भी हम एक रस ढूंढ रहे हैं। तो जब हम कीर्तन तन मन से करते हैं तो एक अनुभूति जो होती है खुशी की, तो उसको कैसे समझे? मतलब एक बहुत ही फाइन लाइन है बिटवीन क्या वो जो है हैप्पीनेस भगवान को करना और हमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उसको कैसे समझे? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। Please accept my humble obeisances. My question is, as we heard that Kirtan should be done for the pleasure of Krishna and not for ourselves, but we see that when we participate in Kirtan and then we feel happy about it. Just like we hear in Bhakti Rasamrita Sindhu that everybody is looking for some ras, for some juice. So we get that rush while participating in Kirtan. So how do we understand that Krishna is being satisfied or we are being satisfied? See, we have to follow the leader. If the leader of the kirtan, his main intention
is to please the Supreme Lord, Krishna, by his singing, then we should also follow him the way he performs his kirtan to please Krishna. So in this way, you'll become happy. As Prabhupada says, if you please Krishna, automatically you'll become happy. महाराज बोल रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमारी प्रसन्नता स्वाभाविक है। अगर कोई जो कीर्तन की अगुवाई कर रहा है वो शुद्ध भाव से कीर्तन कर रहा है और हम उसका ठीक ठीक अनुसरण कर रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, उससे हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। Genuine happiness purifies one's heart. वास्तविक प्रसन्नता हृदय को शुद्ध कर देती है। That is spiritual happiness. यही आध्यात्मिक आनंद है। Material happiness contaminates one's heart. भौतिक आनंद वो हृदय को दूषित कर देता है। It makes you more become entangled more and more in the material world. आप भौतिक जगत में और फंसते चले जाते हैं। So the happiness of the devotees is genuine in the kirtan. जो कीर्तन में सुख की प्राप्ति हो रही है वो स्वाभाविक है, स्वरूप है। So when we go in the kirtan, our purpose is I want to enjoy. No, that's not the purpose. I want to serve, because kirtan means service. तो यदि हम कीर्तन में जा रहे हैं कि हमको सुख मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमका हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। कीर्तन के माध्यम से सुख अपने आप स्वतः ही आ जाता है। That's why Prabhupada says, if one chants Hare Krishna Maha Mantra, he can do it 24 hours. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो वो 24 घंटे भी कर सकता है, Because it's enjoyable. क्योंकि वो सुखपूर्ण है। If you chant with some intention, you want to finish the kirtan immediately. यदि आपका भाव कुछ और है, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, तो बहुत जल्दी आप कीर्तन खत्म करना चाहते हैं। If you are chanting for the pleasure of the Lord, it will not end. You don't want to end. यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाह रहे हैं तो कभी खत्म नहीं होगा, आप उसको खत्म ही नहीं करना चाहेंगे। See, the professional kirtaniyas, they have a time limit. I'm only gonna do 1 hour kirtan, bas, because I'm only getting paid for 1 hour. आप देखें उनकी जो पेशेवर कीर्तनिया होते हैं उनके लिए एक समय सीमा रहती है कि मैं केवल 1 घंटा कीर्तन करूंगा, क्योंकि उनको 1 घंटे का पैसा मिल रहा है। I'm getting 12 lakhs rupees for 1 hour. If you want me to chant more, then you have to give me 1 more lakh rupees. मुझे 1 घंटे के लिए 12 लाख रुपए मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि और मैं कीर्तन करूं तो थोड़ा दाम बढ़ाना पड़ेगा। They're only there for entertainment, इसीलिए केवल मनोरंजन है, to make money. केवल पैसे के लिए। Yeah? But for devotees, they don't want to end the kirtan. They will just keep going, and never get tired. लेकिन भक्त लोग कभी भी कीर्तन को समाप्त नहीं करना चाहते, और कीर्तन करना चाहते हैं और कभी भी थकते नहीं हैं। Like Sukadev Goswami, he went on for 7 days straight. No prasad, no break, no going to the bathroom. जैसे सुखदेव गोस्वामी बिना किसी प्रसाद के, बिना किसी ब्रेक के 7 दिन तक लगातार भगवान की कीर्ति गाते हैं। And everyone are listening very carefully, assimilating all the knowledge. वहाँ पे जितने भी श्रोता थे बहुत अच्छी प्रकार से श्रवण कर रहे थे, सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर रहे थे। We should be like that, right? हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए। To glorify Krishna and not to attract crowd. This is Srila Prabhupada's message. प्रभुपाद जी यही बोले हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता हो, जनरंजन नहीं। Any other question? Okay, the mic is there. प्रभु जी, आपने के बारे में बताया, इसी प्रकार माल जपते हैं ना, उस वक्त हमारा भाव कौन सा होना चाहिए और किस प्रकार हम अर्पित करके माल जप करें? नाम जप। Maharaj is asking that you told about Sankirtan, but while we are chanting on our beats, then what should be our mood? Our mood Whom we should offer that chanting? is the same thing. The chanting, japa, is your personal time with Lord Krishna in the form of the holy name. वही चीज है, सिद्धांत वही लागू होगा कि जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा भगवान के साथ एक पर्सनल समय है। There should not be any distraction. वहाँ पे किसी प्रकार का
डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। See, in the Kirtan, you don't have to think whether your mind is going here and there. It's completely focused on the holy name. कीर्तन के समय हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि मन इधर उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समय मन स्वाभाविक रूप से कीर्तन के ऊपर है। That is why Kirtan is more powerful. The japa, you have to practice to learn the art of chanting. इसीलिए जो कीर्तन है ज्यादा आसान है, लेकिन जो जप है वो थोड़ा कठिन होता है। उसमें हमको बार बार प्रैक्टिस करना होता है किस प्रकार से अच्छी तरह से जप करें। The art of chanting is that to hear the holy name of the Lord and not to be inattentive. नाम जप करने की कला यही है कि हमको भगवान नाम का श्रवण करना है और हमारा मन इधर उधर ना भटके। So that's why it is also good to be amongst the devotees when you chant. इसीलिए भक्तों के समाज में जप करना ज्यादा अच्छा है। It will inspire you to chant if you are amongst the devotees who are very sincere and attentive in chanting. यदि आप प्रामाणिक और तत्पर भक्तों के संग में नाम जप करेंगे तो ये आपको नाम जप करने की और प्रेरणा देगा। One cannot chant like Haridas Thakur alone and have the prostitute nearby. हम हरदास ठाकुर की तरह एकांत में जप नहीं कर सकते जब पास में प्रेषक बैठे होंगे। No. And again, the first and always our mood should be of being a humble servant of the holy name of the Lord. इसमें भाव यही होना चाहिए कि हम हरिनाम प्रभु के विनम्र दास हैं। Humility should be always there. विनम्रता होनी चाहिए। Okay? Anything else, Mataji? Hare Krishna Maharaj, Reverend Pranam. Where are you? Humble obeisances. Oh, okay. I have two questions, Maharaj. First one, there is many devotees who perform kirtan using Bollywood tunes. Hocha. Is that Like what? right, or should we only do kirtan is traditional ragas? And second one is Okay, bhajan. okay. Oh, wait. First one first. ये प्रश्न है कि कई भक्त लोग बॉलीवुड ट्यून में कीर्तन करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? We have so many devotees we can follow the way they chanted. Like in the old school, they've learned ragas. They went to Bangladesh to learn the Bengali tunes. Like if you hear Agnidev Prabhu, Vayasaki Prabhu, they went to Bangladesh. I hear them occasionally, not occasionally, very often, because their chanting is in a pure mood. Bollywood melody, if you're gonna be attracted, but it's not a good practice. I don't think so. Like movie from the movies. Yeah, in the old, there's some melodies that we are chanting, but from the old 1930s movies, right? So 1930s Bollywood movie is not 2025 Bollywood melody. They're more, it's like what's that? The movie Nimai of Nadia. You've seen that movie? In a very old movie, they're singing very nice Bengali tune, melody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, it's very, the language or the melody of the Bengali tune is transcendental. So why you have to imitate Bollywood melody or tune? It's still Hare Krishna Maha Mantra, but it's not so appealing to the heart. Yeah? Better sing the traditional melody. There is one devotee, he wrote a book of 108 ragas of the chanting of the holy name of the Lord. He's a friend of mine, but I was not able to get that. So, yes? Second question? And second question is,
Vaishno Acharya's bhajan more important or Kirtan is important? Both are good, but Prabhupada says that we should sing from time to time the Bengali or Vaishnavas, because most of the Vaishnavas in those days are from Bengal, West Bengal, Bangladesh. Uh, we chant what? Narottam Das Thakur's songs or Bhaktivinoda Thakur's songs. I know Ayendra Prabhu, he likes Hare Krishna Maha Mantra more. When we ask him to lead Guru Puja, he will not want to lead Guru Puja. Uh-huh. Yeah, well, there's some flavor in there. Just during the Tirubab Titi Mahotsav, we will sing the Ye Anilo Prema Dana. You can feel the bhav in the song. It's like right now we're chanting Damodarastakam. So we have to chant all of these different songs also. Depends on time, place, and circumstances. So both are good. Prabhupada sang so many bhajans, right? You can tell. Sorry. तो माता ये प्रश्न था कि वैष्णव भजन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीज बदल सकती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग रस हो सकता है। किसी को हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा पसंद आता है, किसी को वैष्णव भजन ज्यादा पसंद आता है। तो जो भी परिस्थिति है समय के अनुसार, जैसे निर्भाव तिथि होती तो जैन लोग प्रेमाधन गाते हैं, इस समय दामोदर अष्टकम हम लोग गा रहे हैं, तो समय के अनुसार गाया जा सकता है। Yeah, Prabhupada sang simple Hare Krishna melody that everyone can follow, but he sang also so many bhajans and he gave purport to them, right? He will sing and then he will give the purport also. प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र भी जप किया है और उसके साथ साथ बहुत सारे वैष्णव भजन भी गाए हैं और साथ साथ उनको समझाया भी है। Both are good. Some are expert in bhajans and some are experts in chanting Hare Krishna Mahamantra. Any other points? Question? Hare Krishna. Oh. All the glories to Srila Prabhupada. Jai. My question is that you mentioned one thing, that how our Kirtan standards are, we decide how our movement will go 10,000 10,000 years ahead. So my question is, the devotees right now are assimilating in the groups and making it a rock band like this. It is? Yes. And you specially mentioned that it should not happen in Vrindavan and Mayapur, but basically it is happening mostly in Vrindavan and Mayapur. Really? Yeah. So in the temple room? Yes. Really? There are things. Even in Goshala they held concerts and so many things. Also, my question is, when I debate with such devotees, their only argument is that Prabhupada did so. Prabhupada said that preaching is the essence. We have to preach. And to attract the crowd, we have to use these melodies. We have to use guitars and all other instruments like chantagrams and all. That people will be more ecstatic and people will get attracted. Okay. They will join the movement. They will come in ISKCON. Sure. Also, they add that Srila Prabhupada also, for the paid kirtans, people say that, I don't want to mention the name, but there is a controversy going on right now in the Instagram and so many places about kirtan, that the devotee who is doing this said that Prabhupada also did this. Because if we will give the Harinam for the free to people, like if we will give freely, then they will not value this. So we have to do it a paid kirtan. Of what? Like if we will chant Hare Krishna and do kirtans freely, then people will not value this. So we have to get paid for that. We will give some tickets. Yeah. But where do they give? Where do they put the money?
That is the question. That They is, we've say read that it. they are putting the money in next Kirtan concerts and they are traveling to the world and just giving the Harinam to everyone. But my question is that if we will not, like you have said the what Kirtan standards are, but in the ISKCON many leaders, Siksha Gurus, Brahmacharis are encouraging it. And they also say that our Guru Maharaj never said anything against us. Then who are you to? Okay. You said so many things already. संक्षेप में बोल देते हैं कि माता जी का प्रश्न है कि कई लोग बोलते हैं कि हम कीर्तन अगर फ्री करेंगे, कुछ पैसा नहीं लेंगे, कुछ टिकट नहीं लेंगे, तो लोग इसको सस्ते में लेंगे, इसका महत्व नहीं समझेंगे, तो इसीलिए हम इसमें कुछ पैसा लेते हैं। महाराज बोल रहे थे कि पैसा जाता कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। वो लोग बोलते हैं कि जो पैसा है ये हम अगले प्रोग्राम के ऊपर खर्च करते हैं। तो इस विषय में क्या See, the main message that we try to get to the point here is that pure consciousness should be there. So that those who will hear the kirtan, they will immediately take up the process of Krishna consciousness in this lifetime. Okay? मुख्य विषय है कि जो कीर्तन कर रहे हैं उनकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के साथ नाम जप किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, तो जो सुन रहे हैं वो इसी जीवन में भक्ति चालू करेंगे। They may attract others to Krishna consciousness, but it may take them many lifetimes to take up seriously pure bhakti. This is the goal. We chant purely so that we will attract the souls to take up the process seriously, and they will want to attain love of God in this lifetime. For them, they will go maybe charge ticket, whatever, yes, no problem, so that others will want to hear the holy name. But that is not our purpose. Our purpose is for them to become pure devotees. If that is missing in their concerts, Hare Krishna, it's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of going here and there. Do you understand now? One more question, Maharaj. That Okay, should hold, it be- translate this verse, what I said. यदि चेतना शुद्ध नहीं है तो हो सकता है कि कई एक जीवन इसी में लग जाए और व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना भी ना चाहे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी कीर्तन सुन रहे हैं वो इसी जीवन में भगवान के दिव्य शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो सारा का सारा प्रयास व्यर्थ है, सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, इधर-उधर घूमना ये सब बेकार है। Time is of the essence here. Our life is very short. We don't have another 50, 70 years, 60 years to live. Life is becoming shorter and shorter as Kali Yuga progresses. So the more we present Krishna consciousness in its pure form, then the more conditioned souls will take up to it seriously. And if our Guru lets us do that, fine, no problem. We're not going to go against the Guru who's telling them to do it, but that is a long way to go. It's a long way to go. So, yes, we have to charge. As Prabhupada, he was charging. Mantra Brak dance, he was charging. But the proceeds goes to spread Krishna consciousness. If the proceeds of the concerts that what they're doing is going more to their ashram, grihastha ashram, for their means of livelihood, that is not pure. It's not pure. Do you understand now? I have one more question. Is Can you that translate? हमारे पास समय बहुत कम है, हमको प्रयास करना है कि हम शुद्ध प्रकार से लोगों को नाम दें, क्योंकि शुद्ध नाम देंगे तभी जो है लोगों की चेतना प्रभावित होगी, लोगों का जीवन प्रभावित होगा। समय हमारे पास बहुत कम है, ऐसा नहीं कि 50, 60, 70 साल है, हमारे जीवन की आयु अवधि कम होती चली जा रही है।
और जहाँ तक कि धन लेने की बात है तो इसमें ध्यान देना होगा कि वो किस में जा रहा है। वो संकीर्तन आंदोलन को और आगे ले जाने में प्रयोग किया जा रहा है कि वो अपनी गृहस्थी में प्रयोग हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। Okay. हमको गुरुओं से कोई विरोध नहीं है, उनके विरोध में One more question and the last question from Mataji. So the question is that should we debate with such devotees? Should we? Should we debate with such devotees? Should we tell them what Srila Prabhupada did? No, What Srila Prabhupada no, wanted? no. Let them do what they wish to do. You preach to others. That is better. Instead of wasting your time, you're gonna waste your time with them because they're determined to do what they want to do. So you should go and distribute books and ask them to come to the mandir and tell them about Krishna. Do your part in a pure way. I'm not saying they're not doing it in a pure way, but it takes longer. They may attract thousands of crowds, but how many of them will become a devotee? I'm telling you, I'm asking you. How many? I don't know. If there is census, how many devotees they made, because they're there for enjoyment. Okay, one last one, Mataji here, right there. Okay, you have a question also? Okay, last two questions. Turn it on. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज मैं लखनऊ इस्कॉन से हूँ और भक्ति रक्षा लेने जाती हूँ, तो हमारे पास वहाँ इतने कीर्तनिया नहीं है जो हमारे साथ पूरी कीर्तनिया की टीम हो, मृदंग हो, तो मैं ही कीर्तन करती हूँ और मैं ही क्लास लेती हूँ। तो एक करतार पे मैं क्लास कीर्तन करती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ और मैं जो कीर्तन करती हूँ वो शुद्ध नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न व संतुष्ट है? ये कैसे पता चलेगा? I am from ISKCON Lucknow. In that place we don't have so many kirtaniyas to chant or play mridanga. I only chant the Hare Krishna Mahamantra on Kartal and people follow. But I am not pure devotee. So how will I come to know that by my chanting Krishna is pleased or not? I do Kirtan and give class also. Do what you can, and because your effort is genuine, Krishna will send devotees. It is our intention that will attract others to Krishna consciousness. So you set the best example, and by your example, others will become inspired for them to take up Krishna consciousness. So be as you are, true to yourself, and many will be coming. They will be sent by Lord Krishna to come and chant more the Hare Krishna Mahamantra. आप अपना भाव शुद्ध रखिए। आप जिस प्रकार से अच्छे भाव से जप करेंगे तो भगवान ही और लोगों को प्रेरणा देंगे कि आपके संकीर्तन में मदद करें। लेकिन आपका भाव जो है वो शुद्ध रहना चाहिए। यदि भाव शुद्ध है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। Okay? All right, one last question. We have to go. Hare Krishna. मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान के प्रति अपना डेडिकेशन क्या होना चाहिए और गुरुदेव भगवान के प्रति अपना क्या डेडिकेशन होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए? My question is that how much there should be dedication? What is the standard of dedication towards Guru and Krishna? The more you surrender, the more Krishna will reciprocate accordingly. So it depends on your sincerity and your surrender. Surrender means your mind, your body, your words, your action. So the more you surrender, then Krishna will reciprocate accordingly. Okay? आप जितना ही भगवान की शरण ग्रहण करेंगे उतना ही भगवान आपसे जो है भक्ति का आदान प्रदान करेंगे। और जो शरणागति है वो अलग अलग स्तर पे होती है, जैसे मन, वचन, शरीर के स्तर पे।
Krishna is not asking too much from us. We are asking too much from Krishna. भगवान हमसे बहुत कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम भगवान से बहुत कुछ चाह रहे हैं। We want result. No, result will come as long as you stay and be focused, consistent in your practice of Krishna consciousness. हम जो है अपनी भक्ति का फल चाह रहे हैं, लेकिन फल अपने आप आएगा यदि हम ध्यान पूर्वक व्यवसायिकता बुद्धि रख करके भगवान की भक्ति करते हैं। Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Sitana Pramanande. I hope you learned something today and we continue again tomorrow.